Namaskar. Welcome to Apollo 24/7's Health Hour. This is every Sunday's edition that we bring Apollo's experts to the live show. आज के live show में हम बात करने वाले हैं childhood obesity के बारे में, and you can join the live show on YouTube and Facebook as well. If you want to ask a question or two to our experts today, you can join us on YouTube chat box where you can type your question. We shall place your questions before our experts. And also on the show, we are going to have our health quiz where you can win gift vouchers from Apollo 24/7. Also, towards the end of the show, we are giving away discount vouchers and coupons. So stay with us till the end of the show. तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में. वजन बच्चों में क्यों ज़्यादा होता है and इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. तो our first expert for today is a pediatrician, Dr. Timirsahu. He is a pediatrics and neonatology specialist from Apollo Hospitals, Bhubaneswar. And we are also going to have Dr. Pediatrician Dietitian, Consultant Dietetics, Apollo Hospitals, Vijayanagar, Indore. And they're going to join us now. Let me introduce you to Dr. Timirsahu, Pediatrics and Neonatology from Apollo Hospitals, Bhubaneswar. Dr. Saab ka 18 years plus experience है. वो professional memberships इनके है Indian Medical Association, Indian Academy of Pediatrics, National Neonatology Forum. And his specialization is newborn care and treatment of pediatric disorders as well. There, Dr. Timir is here. Good morning, sir. Welcome to the show. Namaste. I'm very happy to be on the show. Thank you. Thank you, Doctor. We shall have a great engaging discussion. And again on this show, we are having Dr. Priya Chitale, dietitian consultants, dietetics, Apollo Hospitals, Vijayanagar, Indore. Ma'am का 20 years plus experience है, and Dr. Priya Chitale can be consulted for monitoring nutrition in all age groups and diet plans for different conditions as well. And she's been here on the show earlier as well. Namaskar, ma'am. Welcome to the show again. Namaste, ma'am. Namaste, ma'am. Thank you so much for having me here. Thank you. Thank you, ma'am. It's such a wonderful morning today, and we are going to talk about something which is very, very, very important for our country's future. When I say this, ma'am, I mean it because according to a recent study, India is going to be the capital of the obesity in childhood, and that's where we are having a great trigger. So can we have Dr. Timir also onto the screen, please, all three of us here. Thank you. Welcome once again, Dr. Timir, Dr. Priya. And I would request you to kindly adjust into the frames so that it's easy for our audience to catch you in a bright way. So, Dr. Priya, to your left, ma'am, to the other side. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. So, Dr. Timir, as I was stating, India is about to face yet another pandemic in a few years where childhood obesity is going to lead us to multiple health problems, and we are going to be the capital of obesity. So, how does this sound? How grave is this situation right now? Like you have very rightly pointed out, when I was a student, when I was training for pediatrics and all, then primary concern was always malnutrition. That is key in children. That is the children were wasted; they were not growing. But from that stage, we have moved to the other end of the spectrum, where now we have to worry about obesity, which is much more common now. Rather than malnutrition. So in a span of just 18 to 20 years, we have moved from one end of the spectrum to the other end of the spectrum. Correct. During the last 2-3 years, during this COVID pandemic, when children were limited to only to indoor activities, they were hardly going out, and there was a lot of exposure to screen, laptops, mobiles, and all for their classes and everything. So and they were staying inside, not playing, not using any energy. So that has led to all children, in fact, they have gained a lot of weight, not in a healthy manner, but they have gained weight without Yeah. having the physical stamina. So बिल्कुल. yes, we are moving towards the, like I said, towards the other end of the spectrum, where now we have to worry about the side effects of excess weight gain, and we have to guide Yeah, our children in wait. that way so that they I do, would want you to talk about the health risks associated with it, but before that, Dr. Priya, how often in your clinic do you see children or parents concerned about their child's weight? Almost daily. It is like कि,
हमारा बच्चा इतना वजन बढ़ गया है, एंड पोस्ट कोविड इट हैज come up like anything. I mean, every now and then we see obese, I mean, kids with obesity, and they are having a lot of issues, as rightly said by Dr. Timir. Insulin resistance है, height नहीं बढ़ रही है, सिर्फ weight put on कर रहे हैं, lot of acanthosis at neck. So it is really scary, and it really disheartens us कि ये next generation क्या कर कैसे इनको मैनेज किया जाएगा. Gee, It is so difficult. which is scary for many other reasons as well. But Dr. Timir, let's understand what can obesity put a child to risk at? What are the risks that follow after a childhood Yes. obesity? Now, in our culture, it is a very common practice that in order to show love, we offer the child or anybody for that matter a lot of food. And when a child is very well, so everybody is happy. Okay, he is eating very nicely and he is very happy to eat and all that. But now we have to take a step back and look at what we are doing in this show of love, shall I say, if I may put it that way. Now, Gee. all children mostly they are gaining weight. Now we are having less children. As a pediatrician, the most common complaint from parents was that कि हमारा बच्चा पनप नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, वजन है. And now it is the other way around. कि I think he is putting on too much weight. And so, like I said, we have moved to the other end of the spectrum. So when I tell the parents, even if they are, let's say, when I chart their height and weight and tell them that I think you should be careful about the weight of the child, then many parents are sometimes reluctant to accept it. They say, no, no, we think the child is fine. We don't see anything wrong with him. All the children of his age are looking like that only. Uh, that is true. But then I have to tell them that, see, I have to pull out my charts and show them where your child is on this chart and where his weight is like. And then I have to tell them what the future holds for the child, which is precisely, I think, what you wish to know. If a child is overweight, then what is his future going to be like? Exactly, So we are doctor. Yeah. we are talking about like Madam Dr. Priya said, early insulin resistance. So the first thing that I tell the parents is that, let's say, if in our generation it was the middle-aged people who were getting in non-insulin dependent diabetes, now it will be far young adults who are developing insulin dependent So, diabetes. sir, Sorry, just non-insulin to dependent diabetes. just to understand, non-insulin dependent diabetes is type 2 diabetes. Yeah, yeah, yeah. That's right. Type 2 diabetes. Okay. So Number children two, with obesity are at risk for type 2 diabetes at an earlier age. At an earlier at age, an like I earlier. said, if as young adults they may suffer from type 2 diabetes, whereas in the earlier generation it was middle aged people who used to develop diabetes, but now it will be young adults. So the age Right. has come forwards, which is definitely not healthy. Number two, if in the case of girls, the you might be knowing that PCOD, that is polycystic ovarian disease, is a very common problem, and that is Gee. starts mostly in adolescence. So, if a Yes. child is kind of overweight before 10 years of age and she goes into puberty with that excess weight, then the chances of her developing polycystic ovarian disease goes up significantly, which a lot Gee. of, let's say, hormonal turmoil and all makes life difficult for the child in many ways. So, not at all desirable. I tell the parents that we have to keep the weight under check. We have to keep the lipid profile all right, and we have to focus that on Yes. health rather than. And we have to, in fact, stop this practice of offering sweets and stuff like that as a show of love and affection. So So, that is what with I this suggest. special, I would want to come to Dr. Priya here. Dr. Priya, I understand that हमारा ये जो sweet obsession है, love and sweet का mixture है, ये बहुत ही bitter truth है. And also, we have one demon called junk. So, what do you think is the Yes. role of food in contributing to obesity towards children and parents' role basically? Yes, actually what has happened is कि nowadays सबके पास time कम है, as a parent also, because they are working and nuclear family, so instant कुछ भी बना करके बच्चों को खिलाना, because yes, we have to make sure that the kid is having the proper meals. So वो instant बना करके कभी नाश्ते में मैगी खिला रहे हैं. Even I have seen in
होम्स, लाइक कि संडे के दिन मैगी बनेगा और फिर शाम में पास्ता बनेगा. So that is the problem. The thing is we are actually forgetting the roots कि भाई हमारे घर में फुल मील बनना चाहिए, वो प्रॉपर थाली दोनों टाइम होनी चाहिए. सो हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि जितना पैकेट वाले चीज़ों से आप दूर रहोगे, जितना नेचुरल चीज़ें आप कंज्यूम करेंगे, उतना आप ओबेसिटी को दूर रखोगे. एक बहुत अच्छा, आई वाज जस्ट रीडिंग एन WHO आर्टिकल वेयर इट सेज कि 5 A per day should be included, like 5 servings of fruits and vegetables should be included in that. So as a parents, it's our responsibility that those sources should be there in the house. अगर घर पे आप चिप्स और बिस्किट ही लाकर रखोगे तो बच्चा कैसे खाएगा? It is मैम you आई who ऐड वन makes मोर, it. जो पेरेंट वो खाता है वो अपने बच्चे को वही खिलाता है जो हम खाते हैं. शायद हम लोग ये भूलते हैं Exactly. कि हम हमारे हमारे जनरेशन में वी स्टॉप्ड ईटिंग कुक्ड फूड एट होम. वी आर गोइंग आउट टू रेस्टोरेंट्स, वी आर बाइंग जंक एंड व्हिच इज द डीमन देयर. यस, और जैसे अभी सर ने कहा कि हम स्वीट जो है वो लव का फैक्टर देखते हैं. यहाँ पर हम लोग जो फेस करते हैं कि रिवॉर्ड के जैसे लिया जाता है. भाई आज पेरेंट टीचर मीटिंग हो गई, आज हम मैकडॉनल्ड्स जाएंगे बिकॉज पेरेंट टीचर मीटिंग में हमारे बच्चे ने अच्छा किया सा. यहाँ प्रॉब्लम है, हम ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि आज खाना हम साथ मिलकर के बनाएंगे. लेट द किड्स गेट इन्वॉल्व इन द कुकिंग एक्टिविटी and purchasing the subsidies and vegetables like normally how you do it. Give them the responsibility of choosing what they want to have rather than taking them to the grocery and asking them to pick the packed foods. Right. Dr. Timir, here quickly I want you to make our audience understand कि other than the factors that we were talking, food and exercise, lack of exercise, are there any other medical conditions which are trying to show up as obesity? Yes, there are, but but they are a very minor percentage. Like let's say, Acha. if there are 100 children with who are overweight, then 98 will be overweight because of external or exogenous or simple obesity. The way, excess of caloric intake and not enough consumption of calories. Only 2% will have some medical reason for their obesity. So they are the ones who need treatment. The rest just need lifestyle measures. तो ये जो हेरिडिटरी और जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं और हु हैज टू टेक केयर इफ देयर इज अ Yes. हेरिडिटरी फैक्टर? हाउ कैन वी कंट्रोल सच Yes. ओबेसिटी, डॉक्टर तिमिर? Yes. The most important point when we are assessing a child is not the weight but the height. So let's say that if a child is having good weight but short height, so that is much more of a concern to us rather than a child who has got good weight and good height. So it is अच्छा. always the stature which is more important. As in malnutrition, the stature is always more important than the weight. So it is a short stature child that we are especially careful about. Other than that, let's say if the child is not growing properly, when we say not growing properly, that means the child is not touching his developmental milestones जी. on time. The child is not developing the skills, age appropriate skills on time. The child is having some neurological deficits, not physically that active. Then we need to worry that maybe there is something medically wrong with the child. Otherwise, a child who is having height which is appropriate for age, maturity, that is including pubertal maturity appropriate for age, and his intellect is also appropriate. In that case, we can largely be assured that this child is having just exogenous or simple obesity. Great. So, Dr. Priya, as Timir ji पहले बात कर रहे थे. By the way, let me tell you, my dear audience, that I speak Telugu and English Hindi, and Dr. Priya also can speak Marathi and Hindi. Dr. Timir, which other language can you also contribute to I the can show? speak in Hindi and Oriya. Oriya as well. तो audience अगर आपके questions इन भाषाओं में आपको करनी है तो please go ahead and ask the questions and we'll get the experts to answer your questions. So, Dr. Priya, I wanted to ask you, कोविड पैंडेमिक के बारे में डॉक्टर तिमिर जो बोल रहे थे कि इसका असर हमारे बच्चों पर कैसे हुआ है एंड हाउ कैन वी रिवर्स दिस, स्पेशली ओबेसिटी कोविड के रिलेटेड. टाइम पे
जी, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जब भी हमारे पास वो विंडो था कि बाहर से खरीद कर लाना है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग पैकेट फूड लेकर के आए थे, बिकॉज़ उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, स्टोर कर सकते हो, खराब नहीं होता है। प्रॉब्लम वहाँ से शायद मुझे लगता है ज़्यादा शुरू हो गई। जितना आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप उतना कंज़्यूम करोगे, एंड मोर टू इट इज़ कि ये जितने भी पैकेट फूड्स हैं ना, वो एडिक्शन वाले रहते हैं। आप एक चिप्स खा के नहीं रुकते हो, एंड इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर किड्स ऑल्सो। अगर एज एन एडल्ट वी कैन नॉट स्टॉप, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ किड टू स्टॉप जस्ट दो चार खा करके? वो जब तक पूरा पैकेट खत्म नहीं होता है, तब तक बच्चे मानते नहीं हैं। सो आप अगर अवेलेबिलिटी ही इनकी कम करके रखोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एंड मोर और आई फील कि जितने एडवर्टाइजमेंट हैं, अगर वहाँ कहीं हम चेक लगा सकते हैं कि दिस इज healthier version, or this is relatively not so healthy option for kids, so that will probably make a difference. Yes, Dr. Timir, while we're talking about addiction, sugar is known to affect the parts of the brain, and वो जो reward mechanism है वो addiction center में काफी मैंने ये कहीं पढ़ा हुआ है कि बच्चों को sugar बिल्कुल नहीं देना चाहिए till whatever 1 or 2 years of age. बट हमारे यहाँ तो शुगर के साथ शुरुआत करते हैं, जो जो हमारे यहाँ साउथ में बोलते हैं अन्नप्राशन बोलते बताते हैं। हैं। हाँ, जो शुगर के साथ शुरू जी, वो करते खीर हैं। से सो होते व्हाट हैं। जी, डैमेज। वो जी सर, जी, कंटिन्यू जी, वो सर। खीर से ही होता है अधिकतर जगह पे, वो जी, चावल के खीर से ही होता है, तो स्टार्ट विथ स्वीट ओनली, जो अन्नप्राशन या है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें हमको ज़रूरी बात जो ध्यान रखना है कि वी हैव ए विंडो अप टू जो जो कि माँ का दूध खत्म करने से लेके जब हम सॉलिड्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये जो 6 महीने का विंडो है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम 6 मंथ्स ऑफ एज टू 1 ईयर ऑफ एज, जिसमें कि बच्चा शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम मदर्स मिल्क टू सॉलिड डाइट। तो इस दौरान हमें खास ध्यान रखना है कि ये जो शुगर और सॉल्ट के जो किक्स हैं जो कि हमारे ब्रेन में मिलते हैं, जैसे कि डॉक्टर क्लियर ने क्लियरली पॉइंट आउट किया कि आप एक चिप्स खा के नहीं रुक सकते, you have to keep consuming them because salt gives you that kick, and similarly sugar also gives you that kick. So इस दौरान ये जो 6 महीने से 12 महीने के दौरान का जो पीरियड है जब हम सेमी सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर हम सॉल्ट और शुगर के ऊपर चेक रखते हैं तो बाद में भी बच्चे को शुगर और सॉल्ट का उतना क्रेविंग नहीं होता है। उस दौरान जब हम वीनिंग करा रहे होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करा रहे होते हैं, उस दौरान माँ बाप का कोशिश यही रहता है कि बच्चा किसी तरह से ज़्यादा खाए। तो उस दौरान अगर वो थोड़ा शक्कर भी डाल दें उसमें, तो उसमें उनको कोई बुराई नहीं दिखती कि बच्चा कम से कम खा तो रहा है, एंड दैट इज़ दैट प्राइमरी कंसर्न। लेकिन इस दौरान जो भी ब्रेन में जो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि ये जो पीरियड है 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स का, इस दौरान जो भी ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं, दे विल लास्ट थ्रू आउट लाइफ। तो ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है कि जो 6 महीने से 12 महीने के दौरान आप इसके ऊपर चेक रखें कि एक्सेसिव सॉल्टी और शुगरी डाइट शुड बी अवॉइडेड ऑल टुगेदर। तो ये बहुत फैंटास्टिक। ज़रूरी है फॉर लाइफ लॉन्ग गुड ईटिंग प्रैक्टिसेस, गुड फूड प्रैक्टिसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स का जो पीरियड है बच्चे में, तो ये बहुत ज़रूरी है। So I did one experiment, Dr. Priya and Dr. Timir, with my niece, who was when she was 1 year old. She was introduced to sweets due to a lot of other peer pressures and other family pressures. तो चॉकलेट जो उसको रैपर में से चॉकलेट खाने का मजा था वो कुछ और ही था। तो मैंने क्या किया, उसमें एक फ्रूट का पीस डाल के चॉकलेट को रैप करके आई गेव इट टू माय नीस हु वाज जस्ट 1.5 2 year old at that point of time. So she expected a taste which she already knew, and she spit out the fruit. You understand? So your brain does not even recognize कि वो कुछ और है, ये नया flavor है या नया texture है. So that is the kind of power of sugar which controlled her taste buds. So this is the risk we True. are talking about. And while I'm talking to you, I'm also peeping at our audience who are talking. अनिल गुप्ता जी, आलू चीनी चावल 5 फुट 3 इंच 92 किलोग्राम, ये बड़ों के बारे में नहीं बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं अनिल जी. So I'll not be able to take your question now. So Vishnu Kondapalli is asking, what can constitute a good diet for children? Dr. Priya, would you want to add here? बैक टू बेसिक्स की अगर बात करूं, तो जो घर में आपने खाया था, जो आपके दादा दादी नाना नानी ने आपको खिलाया था, दैट शुड बी इंक्लूडेड। आपकी थाली में पूरे सोर्सेस होने चाहिए। हम अनाज होना चाहिए, दाल होना चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, दही होना चाहिए। अगर आप ये दिन भर के हिसाब से भी प्लान कर लेंगे, तो आप सारे न्यूट्रिएंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे।
कोशिश करिएगा कि अगर जैसे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वीनिंग डाइट की, वहाँ पर ये नहीं ट्राई करना है कि जो 6 महीने में इनिशियली बच्चे ने वेट गेन नहीं किया था, वो अगले 6 महीने कैसे भी ऊपर का एक्स्ट्रा खिला-खिला के वेट बढ़ाना है। दैट शुड नॉट बी डन, क्योंकि अब फिर हम सब कुछ खिलाना चाहते हैं ना, एक बार हमें विंडो मिल गया खिलाने का तो। सो वो बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश ना करिए, उतना ही खिलाइए जितना बच्चे की ज़रूरत है। डोंट ओवरफीड द चाइल्ड बिकॉज़ you want to catch up with his weight, probably not as the growth chart, but yes, you want a certain chubbiness or certain kind of a look on your child. Right. Sir, Include Dr. all Timir, varieties. yes, yes, ma'am. Will you please repeat that? I kind of overlapped you. I said include all varieties, अनाज, दाल, दूध, दही सब include करिए। और जैसे हमारी गवर्नमेंट कहती है कि नमक कम, तेल कम, चीनी कम, इसको अगर आप ध्यान रख लेंगे तो probably better रहेगा ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए। G. Dr. Timir, here's a question from Rakshak. Rakshak says, are there any markers for identifying malnutrition or obesity in kids less than 5 years? तो क्या है चार्ट, क्या है ये ग्रोथ का पैरामीटर? जी, लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज, इसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं कि लेस देन 3 ईयर्स एंड 3 to 5 ईयर्स। तो लेस देन 3 ईयर्स में आप ध्यान रखिए कि जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए पर्पज से या जिस भी पर्पज से जाते हैं तो मोस्टली आपके डॉक्टर जो है आपका हाइट और वेट आपके बच्चे का रिकॉर्ड करते हैं। तो वो आपका जी, पहला है। और 3 साल के बाद हर 6 महीने में हाइट और वेट रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि आप कभी भी ग्राफ से ऊपर बढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि भाई हम एक्सेस ग्रोथ दिखा रहे हैं इस वक्त करके। जहाँ तक रही बात फिजिकल पैरामीटर्स की, तो इतनी अर्ली एज में हमें ओनली अदर देन द वेट और कुछ हमें कोई बहुत मैनिफेस्ट नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। जो ज़्यादा देर तक का ओबेसिटी रहने पर जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज पे यूजुअली नहीं दिखाई देते। तो इट इज़ ओनली द एक्सेस वेट। इसमें जो एक डेंजर साइन होता है वो है कि हाइट का कम होना, कि मान लीजिए कि वेट ठीक है लेकिन हाइट कम है, तो देन वी हैव टू वरी। तो जब भी आप लेस देन 5 ईयर्स की बात आप कर रहे हैं तो हाइट को हमेशा ज़्यादा ध्यान देना है रादर देन वेट। और लेकिन इस एज में जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं इतना अर्ली नहीं आते, दे ग्रेजुअली डेवलप ओवर टाइम। right. So, this is not regarding obesity, but Geeta is asking this question. My child refuses to eat fruits and vegetables and has very low immunity. Please suggest what needs to be done. Yes, we need to address this booth जो sitting in our dining table के पास में बैठा है कि बच्चे खाते नहीं है इसीलिए हम कुछ जंक खिला लेते हैं। तो how do we address this, Dr. Priya? Basically, it starts from the day we start weaning. अगर आप बच्चे को सारी वैरायटी नहीं खिलाओगे, आप इंट्रोड्यूस नहीं करोगे एट द राइट टाइम, इट विल बी डिफिकल्ट। फिर 10 साल पर वो वापस से रिफ्रेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगेन डिपेंड्स, अगर आप अभी जो जिन्होंने सवाल पूछा था उनका बच्चा कितना बड़ा है, अगर वो 3 साल 4 साल है तो फिर भी यू कैन स्टिल मैनेज। आप जब भूख लग रही है बच्चे को तब कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करें कि जो भी आपको खिलाना है, जैसे पालक खिलाना है तो इस तरह के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करें और उसको खिलाएं। एंड जब बच्चा समझने वाली स्थिति में आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो पर्टिकुलर फूड का इम्पोर्टेंस बता करके खिलाइए उसको, कि व्हाई यू नीड टू हैव टमाटर, व्हाई यू शुड हैव गाजर, इट इज गुड फॉर आईज, सी योर दादाजी हैड ऑल दिस एंड हाउ स्ट्रांग ही इज। Give Put role models in front of them who eats everything, show their thali to them ki yes, they are eating everything. Probably this will help. Yes. Doctor, again, yes, Dr. Timir, would you want to add here? Yeah, I want to add something very interesting which I had read. That is, it says, let food be your medicine. Otherwise, Ah, your medicine will be food. So that is what I tell parents So, also, ki who says ki their immunity is very poor. I say shift to fruits and vegetables. Otherwise, you will keep popping pills just to maintain immunity. That is what I want to superb, say. superb, wonderful, doctor. So, with this, I would want to take another question, which is not regarding obesity, but mother is concerned about the newborn's weight. Dr. Timir, newborn's weight is not increasing despite giving a regular feed. Please guide. ये anxiety normal है, but this anxiety of my child is not growing might also later turn out to feed them excess.
How do Yes. we understand this? Uh, the mother in this case has not mentioned the age of the child and Age. whether it is a breastfeeding child. If it is an exclusively breastfed child, we absolutely need not worry that the child is not putting on enough weight or anything like that. It's A child who is as she said, exclusively newborn child. As she said, uh, newborn. So, in that case, we will need more information. If she is saying that her child is less than 1 month of age, because in the early part of life the child loses weight and then picks up again after the 10th day of life. So we do not I do not have enough information to give her a guided, I mean a clear opinion to what might be okay. wrong. G, thank you so much. So next, I would want you to talk about the eating disorders in children and how they can contribute to childhood obesity. Dr. Timir, please go first. Yeah, yeah. When we talk eating disorders, so we are basically talking about binge eating, which is the most common. And junk food consumption is part of that binge eating, in which we consume a lot of food, short duration. So with society becoming more and more, I mean, nuclear, let's say nuclear families, children having less and less friends, and more exposure to, let's say, there is nobody to share their stresses, nobody to talk to, even for children. They do not have the kind of friends that we used to have as children. Now, they don't have siblings like we used to have. Most families have either one or maximum two children. So there is nobody to share their worries. So this stress otherwise manifests as binge eating. That is, they will reach out to a packet of potato chips or to some biscuits and to let the and then the food, then it acts as a stress buster. So which is not a good idea. If a child is feeling stressed, then maybe he should talk to someone, he or she should talk to someone, or go out and play. That is the way to relieve stress for children, but food is not the way. But the binge eating or reaching out to junk food is the most common. I mean, even children say that I'm not feeling very happy today, and let's go out to, let's say, to some Domino's or McDonald's, which is basically a family outing, which involves a lot of food, which involves a lot of empty calories. So this is not desirable. At the other end of the spectrum is what we see in teenagers, and especially in teenage girls who have body dysmorphic disorder, what we say, in which anorexia nervosa, in which they want to be extremely slim. But that is, of course, a separate issue. When we are Correct. talking about obesity, we are basically talking about eating. Yes, doctor. So, Dr. Priya, here, while we talk about different eating disorders in children, how can we help them if somebody is having such disorders, which Dr. Timir has stated? Yeah, basically, parents' role is very important. You have to actually observe the kid, at what time the kid is reaching out to certain particular food. Like we say, there's this halt kind which we say. If you are hungry, HALT, if you are hungry, look for why you were hungry. What have you not had your meals, or breakfast was missed, or what exactly went wrong? If you are angry, if the kid is really angry and he is looking for instant relaxing kind of a food for him, if he is lonely, if he is really feeling sad, and the last one is if he is really tired. So look for all such things. If you observe that this is happening often, then you really, I mean, the parents really have to consult for medical help. ठीक है. सो यस, या विकास तिवारी जी, आप थोड़े और डिटेल्स दे दीजिए हमें. चाइल्ड इज ओवरवेट एंड हाउ टू कंट्रोल, ये बहुत वेग है. चाइल्ड का एज और उनका करंट एक्टिविटी लेवल एंड ऑल्सो फूड प्रेफरेंसेस भी अगर आप टाइप करते हैं तो डॉक्टर्स विल बी एबल टू हेल्प यू. So next question I would want to take is from Mr. Burhan Sufia. My daughter is 9-year-old. She is not growing. She is looking like a 5-year-old child. She likes to eat biscuits, chocolates and sweets. Please suggest some foods for my child to grow fast. तो ये अलग स्पेक्ट्रम है. Uh, this question is जैसे directed सर to कह me. रहे थे या सर कह रहे थे हाइट बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। वो तो सर वाला पार्ट हो गया, पर अगर चॉकलेट चिप्स बिस्किट्स आप ही दे रहे हैं, एंड इफ यू आर नॉट एक्चुअली गिविंग द राइट न्यूट्रिशन,
तो वहाँ प्रॉब्लम है. जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ कोर्स आर देयर दैट सर विल हैंडल, बट कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें आप सामने रखें ही ना, और आप भी नहीं खाएं. एंड जो बच्चे के फ्रेंड्स हैं, थोड़ा उन्हें भी बोलें कि इनको आप थोड़ा दूर रखें बच्चों से. So, Yeah. Yeah. So, yes, doctor, please. Like the patient has pointed out in this case, that the child looks like a 5-year-old in spite of being a 9-year-old. Now we need to worry about this child. Like the height may be lower, but we have to check other developmental parameters also, that whether the bone age is normal or not. Now this is the child who needs to be investigated, who needs to Oh, be investigated for a pathological cause of her weight and her poor height. So I will okay. ask the mother in this case to reach out to her pediatrician, and this is not something that will be easily solved with just a change in the diet. This child might need a detailed workup. जी बुरहान जी, अपने डॉक्टर्स आपको अपोलो 24/7 पे मिलते हैं. ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कर सकते हैं. ऑल्सो नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी है. यू कैन ऑल्सो बुक कंसल्टेशंस देयर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ. विकास तिवारी जी इज रिप्लाइड. हर एज इज 9 years, वेट इज 38 kilos, एक्सेस ईटिंग है. हाउ कैन आई हेल्प हर मैनेज वेट? डॉक्टर तिमिर, वुड यू वांट टू गो फर्स्ट? 9 years Yeah. and weight is 38. Huh. I will at 9 years of age at 38 kg. I will not worry too much about the weight part. 35 to 40 kg of weight is all right and for a 10-year-old. So I will not worry too much about that. What we have to focus about here is कि the her eating habits of the विकास तिवारी जी की बेटी के जो eating habits है उसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए कि whether she is having healthy balanced food or not, or whether she is having too much of junk food. That is where the जी. emphasis should lie, because there is nothing greatly wrong about the weight of the child at this age. I think it is acceptable. So the parents should think that विकास तिवारी जी को ये देखना है कि उनकी बेटी खाती क्या क्या है. या जो एक्सेस ईटिंग के बारे में विकास तिवारी जी हैज पॉइंटेड आउट. डॉक्टर प्रिया, वुड यू वांट टू गिव सम एक्सपर्ट टिप्स देयर? जी, एक्सेस खाती है, एग्जैक्टली क्या खाती है? सी, अगर वो दाल ज़्यादा खा रही है, फॉर अस दैट इज़ फाइन. If she is having 3 servings of fruit is fine. हाँ, अब अगर जंक फूड खा रही है, वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है. ग्रोथ फैक्टर, जैसे सर ने कहा कि वो उस एस्पेक्ट से हमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है. पर अगर वो मील स्किप कर रही है और अगला जो मील ले रही है उसमें वो ज़्यादा खा रही है, और तभी विकास जी देख रहे हैं उसको खाते हुए, तो देन दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड. Okay, done. So it's again up to you to watch your child. उनके क्या हैबिट्स हैं और क्या फूड हैबिट्स हैं और क्या हम हेल्प कर सकते हैं उनके प्लेट को. सो दिस इज अप टू द पेरेंट. जी. वेल डॉक्टर तिमिर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रजिस्टर्ड यूजर्स क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, माय सन इज 9.5 year old, weighs 45 kilos. I want him to have a lean and athletic body and increase his stamina. So is this child overweight? Not too much. He would still be within the 95th percentile, so I will not classify him as overweight. Maybe slightly a bit on the plump side, but certainly not overweight. And again, this child can easily be, like the parent says, that he would like his child to have a more athletic physique. So obviously, by cutting down on the fats and the carbohydrates and increasing physical activity, that itself should take care of it. Most important is the physical activity part, because dietary changes parents can do at their end, but the physical activity part is something that needs a lot of motivation for the child. Okay. So here, Dr. Priya, would you please advise us, अगर 5 साल के अबाव बच्चे हैं तो उनको क्या कैलोरीफिक नीड्स होते हैं, कितना वो खा सकते हैं और कितना उनको एक्सपेंड करना चाहिए? See, again, it is individual metabolism. You cannot just, I mean, ask them कि इतना एक्सरसाइज करो. हम लोग ये कहते हैं कि अगर बच्चा प्रॉपर ग्रोथ पैरामीटर्स मीट कर रहा है, इफ ही इज ग्रोइंग वेल, इफ ही इज नॉट क्रैंकी ऑल द टाइम, एंड एज पर यू इफ ही इज ईटिंग वेल, सो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा जब भी आप कंसल्ट करते हैं आपके नॉर्मल वैक्सीनेशन के दौरान, तो जब भी कोई ब्लड पैरामीटर्स कराते हैं,
प्लीज़ चेक करिए कि सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं कि नहीं। यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, पर हाँ, अगर आप सारे सोर्सेज़ दे रहे हैं, दूध अच्छे से दे रहे हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग इंक्लूड कर रहे हैं, फिश इंक्लूड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी क्वोशिएंट हम लोग नहीं ऑब्जर्व करते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है स्पेसिफिकली बच्चों के केस में कि अ, उनका रूटीन कैसा है, आई मीन मोशन बराबर है कि नहीं, वेल हाइड्रेटेड हैं कि नहीं, एक्टिविटी के दौरान वो गिर तो नहीं पड़ रहे हैं। थोड़ा-सा अगर ये ऑब्ज़र्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। Well, while you say about hydration, I found a question here. Nandakishore ji पूछते, how much water should be consumed by a child in 24 hours? Any of you, please. सर हाँ, ऐसा कोई मैं आपको बोलूँगा ऐसा फिक्स लिमिट नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन कि इतना वेदर कंडीशंस एज वेल एज द फिजिकल एक्टिविटी लेवल ऑफ द चाइल्ड. A child who is in the summers, I think the cutoff should be how many times the child is passing urine, and it has to be at least 6 times in 24 hours. Anything less than 6 times means that the child is not taking enough water. And so in summers when the temperatures are going up, when the child is sweating a lot, the urine output is likely to fall. So we need to comparatively increase our water intake. तो नंदकिशोर जी को मैं यही बोलूँगा कि बच्चों को जो हम सलाह देते हैं कि पानी का बॉटल लेके जाएँ, उसको ख़त्म करके आएँ. तो जो स्कूल में जब जाते हैं, तो और ये भी आप थोड़ा-सा इंश्योर कर लें कि भई स्कूल में टॉयलेट वगैरह जो है वो इस्तेमाल लायक है. उसमें बच्चे बहुत कतराते हैं अगर टॉयलेट साफ नहीं होता है, तो दे रिड्यूस देयर वाटर इनटेक सो दैट दे डोंट हैव टू गो टू द टॉयलेट. सो इस बात को भी ध्यान में रखें कि वो कम से कम 6 बार कम से कम बच्चा जो है टॉयलेट जाना चाहिए. Wonderful. Dr. Priya, here I would want you to please advise us कि अगर डाइट का रोल है, जंक डाइट का रोल है चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ाने में, तो डेफिनेटली घटाने में भी डाइट का अच्छा रोल है. तो हाउ लॉन्ग शुड अ चाइल्ड बी इंट्रोड्यूस टू गुड फूड एंड हाउ मच टाइम शुड दे टेक टू लूज वेट? सडन वेट लॉस तो नहीं हो सकता है बच्चों में, तो कैसे ये ग्रेजुअली नहीं। हम हेल्प? हमारी सबसे पहले एडवाइस ये रहती है कि बच्चों को कोई डाइट नहीं करना, आई मीन स्ट्रिक्ट रिडक्शन इन देयर कैलोरी इनटेक शुड नॉट बी डन, बिकॉज कहीं तो भी हम डेफिशिएंसी आगे फेस करेंगे. हम लोग पेरेंट्स को भी ये एडवाइस करते हैं कि आप मील स्किप करने को नहीं बोलिए किसी भी बच्चे को, बिकॉज दे नीड दैट मच ऑफ एनर्जी फॉर देयर रूटीन एक्टिविटी. वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं. वो शायद दिखता नहीं है, पर अगर आप कभी उनको वॉच लगाएँगे और उनके स्टेप नोटिस करेंगे ना, वो हमसे कहीं ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. सो बिल्कुल. उनके केस में हम हाँ जी, हम लोग बिल्कुल नहीं कहते हैं कि मील स्किप करने को बोलिए, हम बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि भूखा रखिए बच्चे को. ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए नहीं हैं. दे नीड अ वेल बैलेंस्ड डाइट एंड दैट शुड बी मॉनिटर्ड ऑल थ्रू आउट. जब तक बच्चा बढ़ रहा है, तब तक उनके लिए वो न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ग्रोथ हैम्पर होगी, आगे के डेवलपमेंट हैम्पर होंगे और फिर कॉम्प्लिकेशंस आगे ज़्यादा बढ़ेंगे. So all सो these कोशिश diets करिए. that the elders नो, दे आर follow, these टोटली are नॉट फॉर नो, नॉट फॉर किड्स एट ऑल. Ji. Thank you so much for reiterating that. Yes, Dr. Timir. जस्ट वन पॉइंट आई वांट टू मेक कि कितना हमें तेजी से जाना चाहिए, कितना वजन घटना चाहिए. तो द कट ऑफ इज कि वी डू नॉट एम फॉर मोर देन 1.5 kg वेट लॉस इन 1 month. दैट इज द अपर लिमिट. एनीथिंग मोर Wonderful. ड्रास्टिक देन दिस वी डोंट वांट. एंड द Okay. वेट लॉस प्रोग्राम हैज टू बी एटलीस्ट फॉर 6 months. इट कैनॉट बी वेरी शॉर्ट कि हम अगले 2 महीने में 3 महीने में हम यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है. इट हैज टू बी ग्रेजुअल and it has to be slow, and the emphasis has to be on lifestyle factors always. Great. Wonderful. So here I found a very interesting question, Dr. Timir. I think I should direct this question to you. How does surplus weight in children lead to slow brain functioning, and how can that be dealt with? Is this true that Yes, उनका functioning slow हो जाता yes, है? yes, 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 that's a very good question. इसको हमें ऐसे हमको आप जैसे कि हमने जो एक्सेस वेट गेन जिन बच्चों में होता है, तो in very early age also you will notice snoring in them. Basically when there is growth of excessive soft tissue because of weight gain, so these children tend to develop snoring at an earlier age.
they and their their chest movements during breathing and coughing are not that good, so they develop some chest infections also repeatedly, manifest most upper respiratory tract infection कि उनको सर्दी जुकाम खांसी होता रहता है करके काइंड ऑफ। बट द कट ऑफ इज ऑलवेज कि सांस लेते वक्त रात को खर्राटे की आवाज आती है। नाउ खर्राटे में अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब खर्राटे की आवाज आती है तो बेसिकली आपका जो ब्रेन में जो ऑक्सीजन लेवल्स है दे स्टार्ट फॉलिंग, स्पेशली बच्चे जो हैं रात भर अच्छे से सो नहीं पाते, दे हैव ए डिस्टर्ब स्लीप ड्यूरिंग द नाइट, द रिजल्ट इज दैट द नेक्स्ट डे ऑल्सो दे आर नॉट दैट अलर्ट, नॉट दैट फोकस्ड, उनका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो उतने अच्छे नहीं रहते। इसलिए जब हम कहते हैं कि वेट गेन या एक्सेस वेट गेन से हमारा मेंटल फंक्शन थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो व्हाट वी मीन इज कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, दैट इज ट्रू, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जो हम जो कहते हैं ना एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट्स आल्सो टू ब्रेन डेवलपमेंट, वो तो नहीं हो रही है, साथ ही साथ जो डिस्टर्ब स्लीप है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है टू टू द इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव या ब्रेन फंक्शंस को, तो ये दो चीजें हैं। Ji, thank you so much for giving your expert tips there. Next question is from Surinder Jandial. My daughter's 5 year old. She's having a strong craving towards potatoes and Maggie. Otherwise, she is eating all the food. Is this okay? No, So, it is first, Dr. certainly Priya. not okay. इट इज नॉट ओके। बच्चों में टेस्ट और आदत हम डेवलप करते हैं एज अ पेरेंट। बच्चों को नहीं पता मैगी का क्या टेस्ट था, हमने इंट्रोड्यूस किया था। बच्चों को नहीं पता था कि आलू फॉर अस इट इज नॉट अ सब्जी। हम सब्जी कम पड़ रही है, वी आर एडिंग आलू एंड गिविंग, और if the kid is not liking a particular vegetable, we are making आलू की सब्जी and giving. So it is us who are responsible for the eating habits of the kid. So Okay. try and encourage the kid not to have Maggie and aloo often. Okay, great. Dr. Timir, here's Kavita's question. Kavita Hussain. Good morning, doctor. My daughter's 8.5 year old, 50 kilograms. She loves to eat chicken and I think she overeats it. She has very less physical activity and junk is not too much, but once or twice in a week she eats junk. How can we help her? कविता जी को मैं यही बोलना चाहूंगा कि यस, हर कंसर्न्स आर परफेक्टली जस्टिफाइड। 8.5 year old वेइंग मोर देन 50 kg, it is a reason to worry. Second part is ki over emphasis on chicken. So I don't think she is having enough greens. So there is a lot of emphasis on non-vegetarian food, and chicken is fine, but we have to wean her away from chicken. That like कविता जी ने जैसे कहा कि वो जंक फूड ज्यादा नहीं लेती, मे बी होममेड चिकन ही उनका काफी ज्यादा होता है। जैसे कि बच्चा कहता है कि मैं इसके अलावा नहीं खाऊंगा, और कुछ कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चा कहता है कि मैं चिकन नहीं होगा तो आई विल नॉट टेक फूड, इससे तो अच्छा है कि मैं खाना ना खाऊं, है ना। अगर ऐसा है तो वी नीड टू वीन हर अवे फ्रॉम दैट, इट कैन नॉट बी डन ओवरनाइट। एक आप बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक कह देते हैं कि आज के बाद चिकन नहीं बनेगा, तो वो बच्चा कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो इट हैज टू बी डन इन ए फेज्ड मैनर। लेट्स से वी विल हैव चिकन, अभी अगर रोज बन रहा है तो वी विल हैव इट मे बी थ्राइस इन ए वीक, कट इट डाउन टू ट्वाइस एंड मे बी टू लेस देन दैट, बट ग्रेजुअली ये भी हम उसे कह सकते हैं कि अगर चिकन खाना है तो उससे पहले सब्जी भी खानी पड़ेगी, ये भी हम उसको कह सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो मतलब एक जो वरी वाला पार्ट है कि चिकन में जो खासकर जो ब्रॉयलर चिकन्स में जो हम इंजेक्टेबल्स देते हैं टू एनकरेज फास्टर ग्रोथ, I तो know. वो एक वो एक चिंता की बात होती है, क्योंकि दे कॉज हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इन चिल्ड्रन, and they are definitely not healthy. So Yeah. these children are not grown in natural surroundings, and they are given hormonal supplements for faster growth, and they cause problems in children also. So better to shift to greens. Yes, Dr. Priya, your advice in this case, please. Yes, as long as they are monitoring the portion size, then it is okay. How she's preparing her chicken, if she is deep frying it, it should be shifted to probably roast and grilled form where she can cut down her fat portion of it. And then it make it with a lot of green salads so that chicken is also there. She can reduce the quantity of chicken and she'll be able to introduce greens and vegetables to that. So little twist in the recipe can be done, and this is how gradually she can introduce the kid with greens and vegetables.
एंड चिकन इज ऑल्सो देयर, सो वो चिड़चिड़ वगैरह फैक्टर नहीं होगा बच्चों का. Yeah. So here's one tricky question coming up to both of you. One after one, I would want to answer. This is, where's your question? Yes. Raj, 52-year-old male hai, but he's asking, does keto diet work for teenagers to reduce obesity? Dr. Timir, first you go. जी. कीटो डाइट इज ए इज ए काइंड ऑफ आई विल से एन एक्सट्रीम डाइट. इतना रेस्ट्रिक्शंस हम टीनेजर्स पे नहीं लगाते. ध्यान रखिए, बच्चों में हमेशा रूल होता है, फर्स्ट वी हैव टू अचीव लीनियर ग्रोथ, है ना. जो आपका फाइनल हाइट है वो हमारा पहला गोल होता है. अगर हम डाइट को इतना कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कि बच्चे का हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो दैट इज डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल. अगेन, तो कीटो Absolutely. डाइट का सलाह मैं किसी भी बच्चे को नहीं देता. मेरे को नहीं लगता कि मतलब लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज इन चीज़ों का कोई खास रोल है. अगेन, कीटो डाइट लाइक आई सेड इज एन एक्सट्रीम मेजर. इन चिल्ड्रन वी नेवर एडवाइस एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम मेजर. इट हैज टू बी ग्रेजुअल, इट हैज टू बी लाइफस्टाइल मेजर. तो कीटो हो या एटकिंस हो या जीएम हो या साउथ बीच हो, नहीं, आप नहीं, जो कोई बच्चों को हम नहीं. नहीं, नहीं, नहीं. Yeah. Dr. Priya, The you emphasis also is always agree on this? always on balanced diet and exercise. Yeah. Dr. Priya, would Yes, you very also say? rightly said by sir. Yes, no crash dieting, no particular pattern of diet is required for kids. Keto is basically for kids who have epileptic episodes or who are on that spectrum. So, for a normal kid, it is not advisable at all because you are reducing the essential macronutrients from the kid's diet. So totally no for kids. Wonderful, ma'am. Thank you so much for those tips, Dr. Timir. Next question is from Sumita Sharma. Son is 16-year-old, 5 feet 11 inches, 96 kilos. So, how can he lose weight? So this is again a different age group of children. 16 आ गए हैं तो बढ़ गए हैं, अपने हैबिट्स भी फॉर्म हो चुके हैं, इनको अपना फिजिकल एक्सरसाइज का भी शायद पता है इम्पोर्टेंस, एंड दे स्टार्ट टू worry about their appearance as well in this age group. So Dr. Timir, is Right. he overweight, and how does this graph look? Yes, this child is overweight, and the good part is कि he has almost reached his adult height. Like कि जैसे 16 साल का हो गया है बेटा, तो 5 फुट 11 इंच है. तो I think he will gain a couple of inches more by the time he finishes touches 18. So that is good. As regards the weight part, थोड़ा सा physical activity का जरूरत रहेगा. लाइक क्योंकि 96 kg स्टिल ऑन द हायर साइड. आई डोंट थिंक, जैसे अगर इनका इतना कंसर्न है कि इफ दिस चाइल्ड वर ए वेरी मस्कुलर चाइल्ड, आई वुड नॉट बी टू वरीड. बट एंड एन एथलेटिक चाइल्ड हु इज हैविंग गुड फिजिकल एक्टिविटी, आई विल नॉट बी टू वरीड. बट अगर मदर को ये सोचते हैं कि बच्चे का वजन ज़्यादा है, तो शी शुड फोकस की अभी खाना क्या खाना है और एक्सरसाइज कितनी करनी है. लेकिन वेट जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं है. इट कैन बी ब्रॉट डाउन. एंड बच्चा मतलब अभी भी ग्रोइंग एज में है, सो अभी कोई क्रैश डाइट अभी भी मैं इनको सलाह नहीं दूंगा. Great. Dr. Priya, your advice on this? जी, यहाँ पर वेट जैसे थोड़ा-सा ज़्यादा है, पर क्या न्यूट्रिएंट्स वो ले रहे हैं, क्या उनका डाइट पैटर्न है? इफ ही इज़ लाइक अ होस्टलर, देन वहाँ पर की अवेलेबिलिटी में ज़्यादा इंस्टेंट फूड ही जा रहा होगा. सो अ प्रॉपर रिकॉल विल बी रिक्वायर्ड एंड येस वी कैन एक्चुअली गेट द किड टू हिज नॉर्मल वेट. बहुत Great. मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स कब लेने हैं, कितने प्रोपोर्शन में लेने हैं, दैट्स इट. Wonderful. And a dietitian, Dr. Priya, can be consulted on Apollo 24/7 as well, Sumita. You can take a note of it. So, next question to you I would want to ask is, how seriously should obesity in a 1 year child should be taken? If it has to be taken seriously, please share the remedy. Obesity in a 1 year old child, it has to be seen in perspective. When I say perspective, it has two, three things we need to know. That is, first of all, we need to know ki whether what was the birth weight of the child. A child who was born, let's say 3.5, 4 kg of weight, if he is weighing 12 kg at 1 year of age, we would be perfectly fine with that. Again, the height of the child would also matter. But let's say that we have an obese child, a child who is visibly obese. So we need to work up that why did this child develop this kind of. The most common cause of excessive weight gain at this age is that is if there has been some medication.
Now, what happens is that many children develop repeated chest infections and respiratory infections in the early part of life. And it is a practice in many parts of the country, especially in the peripheries, that to give steroids for respiratory infections because they give faster relief. So they do give faster relief, but they also add on to the weight. So every course of steroid is followed by excessive craving for food, and the child gains weight. Everybody is happy that the child is picking up weight after this illness, but that is not healthy weight. So a 1 year old child, if he is visibly obese, then we need to worry about it and find out the cause. Some basic investigations will be needed in this case. Other than the history part, some basic investigations like uh, is the child carrying any genetic disorders like familial hypercholesterolemia or anything like that. So some a lipid profile, a thyroid profile, and fasting sugar and glycosylate hormone, things like this. We will need some more information. But first, the most common cause of excess weight gain at 1 year of age, I would put it as that is wrong Medication. medicines, the use of wrong medication. सर एज यू टॉकिंग अबाउट द टेस्ट टू बी डन टू, अगर कोई ओबीज है और उनके जेनेटिक फैक्टर्स भी है कि वो दिखते हैं कि ओबीज है बट कुछ करते हैं, जैसे उनको क्या क्या टेस्ट करवाने हैं अपने बच्चों के ऊपर और क्या मॉनिटर करना है? जो हम किसी भी बच्चे में, जो कि हम जैसे कि हमको ये लेबल करना है कि वेदर दिस इज सिंपल ओबेसिटी और दिस इज पैथोलॉजिकल ओबेसिटी, जो कि हम करते हैं, तो उसमें जो हम टेस्ट कहते हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक सिंपल सा सीबीसी करके हम देख सकते हैं, जिसमें कि अगर आपका ये लेट्स से हीमोग्लोबिन इज ऑन द हायर साइड, है ना, तो ये आपका जो 16-17 हीमोग्लोबिन आ रहा है, इसका मतलब कि बच्चे को रात में हाइपोक्सिया हो रहा है, तो जिसके चलते कि हीमोग्लोबिन उसका बढ़ रहा है ना, स्लीप एपनिया वगैरह हो रहा है। फर्स्ट। नंबर टू इज कि उसका एक फास्टिंग ब्लड शुगर और एक ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन हम करके देखते हैं। तीसरा कि उसका जो एक थायराइड प्रोफाइल करके हम देखते हैं कि टीएसएच और जो फ्री टी4 करके देखते हैं। एंड फोर्थ इज कि लिपिड प्रोफाइल भी हम करके देखते हैं। साथ ही साथ एक यूरिन कराते हैं कि उसमें वो शुगर पास तो नहीं कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो कि हम बच्चे में कराना पसंद करते हैं। इसके अलावा बाकी राइट। टेस्ट में ऐसा कुछ ये मिलने का ज़्यादा उम्मीद नहीं होता। इन टेस्ट में इफ़ वी आर क्लीन, then we know that this child is a case of simple obesity and we just need to manage with food and exercise. Right. Dr. Priya, now I would want you to talk about girls, especially obesity in girls and leading to PCOS, and they are in the cycle where they're trying to lose weight and the PCOS is giving them weight. This vicious cycle, how do they break with diet? सी बेसिकली ये वाली एज ग्रुप सबसे ज़्यादा क्रूशियल है बिकॉज एज अ गर्ल दे आर द बेरर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पर अगर उन्होंने अपना डाइट मैनेज नहीं किया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पीसीओडी के साथ भूख भी लगेगी, थोड़ा साइकिल्स भी इरेगुलर हो गए, एंजाइटी भी होगी, तो और मिरर इमेज या मिरर कॉन्शियसनेस जो है वो भी रहेगा। तो lot of counseling and emotional support is there. They need to also understand, कई बच्चों को तो ये पता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है, एंड देन स्टिल दे लैंड अप ईटिंग द रॉन्ग फूड। तो वहाँ पर हम लोग उनको कहते हैं कि आप थोड़ा लिख के रखो कि कब आपको ये खाने का ज़्यादा क्रेविंग हुआ था। मतलब आप चिढ़े हुए थे, आप किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस था, तब आप कंट्रोल नहीं कर पाए एंड यू ओपन द चिप्स का पैकेट या बिस्किट या चॉकलेट। तो जब वो सामने रहता है, उनके दिखता है कि हाँ भाई ये गड़बड़ हुई थी, देन स्टिल दे कैन कंट्रोल इट। सो Yeah. they know the importance, they know why they should control it, but probably lot of counseling and in person connect बहुत ज़रूरी है इस So एज yeah, ग्रुप तीन के लोगों बच्चों की के जरूरत है. One a pediatrician, two a dietitian, and three a psychologist as well in such conditions. Yes, yes, Yes. yes, yes. Yeah. It So is a multidisciplinary approach when we have this kind of a kid who knows everything but still is not in a position to manage. जहाँ नहीं पता है तो वहाँ हम लोग समझा सकते हैं, पर जहाँ पता है और फिर भी मैनेज नहीं हो रहा, वहाँ थोड़ा सा ट्रिकी हैंडल करना G G. पड़ता है। So Dr. Timir, here's again an interesting question. Baby, 7 months old, 10 kilos, 10.17 kilos hai, still being breastfed. Is there something to worry about this weight? No.
Ricky Martin I का will not worry. I will not worry because if this child is still being breastfed, the most likely this has been on exclusive breastfeeding till 6 months of age. What I presume is that this child was born more than 3 kgs. So 7 is 3 kgs. So I expect this child to double his weight at around 4 months of age. That is around 6 to 7 kgs. So 7-month old child, 10.1 kg, still on breastfeed. I will not worry. Yes, yes. So one quick question, Swati Mishra is asking, does obesity trigger anxiety in children and how to manage it? Dr. Timir. Yeah, it is definitely a cause of anxiety in children because as children are growing up, तो बच्चे चिढ़ाने लगते हैं कि भाई ये मोटा है या ये है वो है करके इस तरह से चिढ़ाने लगते हैं। तो ये उनको एक बॉडी डिस्मॉर्फिक थोड़ा सा एक इशू होता है जिसमें कि दे डू नॉट फील कंफर्टेबल विद देमसेल्फ, देयर कॉन्फिडेंस लेवल गोज डाउन कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी आई एम नॉट एज फिजिकली फिट एज आई शुड बी। तो ये सब सॉरी उनको एंग्जाइटी के इश्यूज होते हैं। साथ ही साथ जब थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट टीनेज बॉयज एंड इफ दे आर ओवरवेट, तो ये जो इस वक्त जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो दे आल्सो टेंड टू डेवलप a little bit of breast like tissues। तो गायनेकोमेस्टिया जो एडोलेसेंस एज ग्रुप में आती है विच मेक्स देयर लाइफ स्टिल फर्दर कॉम्प्लिकेटेड कि वो चिढ़ाने का जो सिस्टम है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। दे बिकम वेरी शाई, दे स्टॉप गोइंग आउट and things like that ना, they stop wearing t-shirts and all and the way a normal child should be living, वो अपने को withdraw कर लेते हैं। तो ये ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा कॉन्फिडेंट रहे तो ये बहुत जरूरी है कि वो फिजिकली एक्टिव हो। तो ए हेल्दी चाइल्ड हु इज हैविंग गुड वेट वी विल नॉट वरी, बट एन ओबीस चाइल्ड जिसमें कि थोड़ा फिजिकली ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, जब जिसमें कि उसको एक पीयर प्रेशर भी हो रहा है, बच्चे उसको चिढ़ा भी रहे हैं, तो वो हम हेल्दी बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो डेफिनेटली ओबेसिटी इज अ कॉज फॉर एंजाइटी इन चिल्ड्रन। Bilkul. So next up, everyone saying let's avoid junk food for children, prevent diseases in future. Yes, Dr. Rachna Soni and Anmol Ratan Singh, that's the call that doctors have been given today. Dr. Priya, one question for you is, child is 3.5-year-old, Nandikishore ji पूछ रहे हैं, he is crazy about having normal paratha, not the potato stuffed paratha, every day in the lunch. Should we restrict this? He is all good. Can his eating habits affect him over the time? यस, अगर एक्टिविटी कम रहेगी और हम एनर्जी डेंस फूड देते रहेंगे तो डेफिनेटली ये कहीं न कहीं इम्पैक्ट करेगा। आप थोड़ा-सा बार्गेन करना शुरू करें बच्चे के साथ नंदकिशोर जी कि एक बार पराठा मिलेगा, अगली बार रोटी मिलेगी। सो दैट इज़ हाउ यू कैन मेंड थिंग्स। एकदम से कुछ भी नहीं होगा। आज Also make the paratha more interesting. I would advise as a mother who is add giving lot of me vegetables to it। yes, या और जब सच में बच्चा भूखा हो तो ऐसी चीज दें जो आप उसको एक्चुअली खिलाना चाह रहे हैं। पेट भरे हुए पे आप बोलेंगे कि नहीं ये खाओ जो उसकी पसंद का नहीं है, तो देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज। that's a good भूख लगती yeah. है जब भूख लगती है तभी आप negotiate करो. That's a good tip. जी। Yeah. So with that, I think today's time I'm getting closer to 12 बजे होने वाला है, so I have to wrap up the show. Dr. Timir, I would want you to give me top 3 reasons why childhood obesity should be avoided and why we should take care of our children. Top tips, please. Why it should be avoided? So when we are talking about childhood obesity, and if we are able to prevent childhood obesity, then we are talking about lifelong good health. A child who is healthy during his early part of life is likely to be healthier later on also. So that is first and foremost, that all lifestyle illnesses that we face, like diabetes, like hypertension, like cardiac disease and all, they all can be prevented if we try to keep the child healthy, inculcate good eating habits, inculcate the need for regular exercise in childhood itself. So first and foremost, to prevent late onset adult diseases, we have to prevent childhood obesity. Number two, when we are talking about growing a healthy, confident child, again, the physical appearance of the child, the physical activity level of this has to be kept in mind. So again, if we want the child to grow normally, if we child to grow into a successful young adult, then also we have to prevent childhood obesity. And third, sorry, and third tip which I would like to give is that, like Madam had mentioned, that how to summarize this whole thing. That is, it is said that it is 5 and 0. That is
5 meals of fruits and vegetables, maximum 2 hours TV viewing, 1 hour of physical activity every day, and zero sugary drinks. So I'll repeat it. It is 5 to 10, 5 meals, that is small meals with fruits and vegetables, maximum 2 hours of TV viewing or any kind of screen viewing, 1 hour of physical activity every day, and zero sugary drinks every day. So this is the 3 tips which I would like to give to control childhood obesity. Thank you so much, Dr. Timir. That's great advice there. And Dr. Priya, top tips from you, please. I would suggest to introduce a lot of whole grains and millets in the kids' diet. Have give them a lot of colorful variety and not just the potato. Eat whole fruit and avoid juices and carbonated beverages. Lot of nuts, oil seeds should be introduced. Healthy meal pattern should be given to the kid. That should be the family's habit rather than just for the kid. सबको ही ये चीज़ें फॉलो करनी है, तब बच्चा आपको देख करके सीखेगा. And avoid processed and fast food as far as possible. The reward should be eating healthy rather than eating junk. Thank you. Thank you so much, both of you. We appreciate your time on a Sunday morning and your patience, your expertise. Namaskar. Thank you so much. Thank you so much. Thank Yeah. you. Thank you. So now this is our time for health quiz. I'm going to ask you 3 questions. You need to type the answers on YouTube chat. Winner's name will be announced towards the end of the show, and winners will be selected at the sole discretion of Apollo 24/7. And winners, you have to mail your contact details at marketing@apollo247.com. Gift vouchers will be shared with you. And by the way, let me also give you an announcement here. Due to certain technical reasons, we could not disperse the last week's quiz winners, so which shall be done along with this week. So please, we're extremely sorry for the delay, but we shall take care of it. Thank you for being patient. Here are the questions for today. The first question is, please state in true or false. Question number 1. Children are overweight only because they have big bones. True or false? Question number 2, fill in the blank, please. Obese children are at the increased risk of dash diabetes. Which type of diabetes? Please type in there. Question number 3, answer in yes or no. Energy drinks are safe for children and young adults. These are the 3 questions that we have given you. Please do type your answers and we'll wait to see your answers on the screen. तो चलिए, while you're answering, let me also give you the coupons for next week. तो ये है पहला कूपन हम लोग देते हैं, ask doc 150 you get up to 150 cash back on online doctor consultation. So consult top doctors from Apollo hospitals and get cash back as well. Terms and conditions apply, but you need to download Apollo 24 to use the 24/7 to use these coupons. तो चलिए next coupon देते हैं. The next coupon that we are giving you is First 3, FIRST3. When you order medicines direct from Apollo 24/7 app, you get 25% off on online medicine orders. This is valid for the first 3 medicine orders which are above 1000 rupees. And you get up to 2 hours delivery bhi hai, express delivery bhi hai. Use कीजिए, download कीजिए Apollo 24/7. And to all the Health App viewers, as you all know, that we give an exclusive coupon for this program viewers. Use the code HH247. In addition to the other coupons, you get 199 off on online consultation with Apollo doctors and up to 20% off on medicine orders as well. So you now can download Apollo 24/7, or you can also use WhatsApp. You can call a WhatsApp on 9355247247 to avail healthcare services. They are just a call away if you're looking for medicines or booking tests as well. Next week, we are going to talk about a very, very interesting topic. Why are cancer cases on a rise? As World Cancer Day is approaching, we are doing a special episode. 5th February, 11 a.m., we are going to talk about cancer cases on rise. And I see a lot of them have participated. Dr. Rachna Soni, Surinder Jandial, Rakshak, Nandkishore, Harminder, all of you have participated, and let's see who the winners are for today. And next week, we are also going, last week's winners will also receive their
health credits and the gift vouchers along with this week's winners. I'm waiting for the winners. And Tajinder Singh ji pulled their false, type 2 and true. Okay. And the winners for this week are Rakshak AR. Congratulations. You have to write back to us at marketing@apollo247.com. And who else are the winners? I'm still waiting for our team to pick winners. All right, so next week, cancer cases on a rise. What are the reasons? And if you think that you are worried about some kind of cause that can include, which is carcinogenic, you do discuss with us, because it can be anything. We will be taking your questions as well, which are very important. Let's also bust the myths, and let's get the right facts. Okay, so last answer, most of you have typed wrong. So this week we have only one winner, that is Rakshak AR. Congratulations. And next week milte hai. Till then, please do take care. Namaskar. Thank you so much.